Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you are fine. Today we shall study English of class 4. Let's start our 6th unit, An Old Man, एक बूढ़ा आदमी. Students, ये जो हमारे पास एक पोइम है, इसमें एक बूढ़ा आदमी है जो मजाक कर रहा है. इसके ये झाड़ियों की तरफ देख के कहता है हश हश. तो वहाँ पे झाड़ियों के पास खड़ा हुआ एक शख्स से पूछता है कि क्या झाड़ियों के पीछे परिंदे हैं. तो वो कहता है नहीं, झाड़ियों के पीछे परिंदे तो नहीं हैं, बल्कि झाड़ियों से भी 4 गुना बड़ी चीज़ है. तो इस तरह से जो बूढ़ा आदमी है वो मजाक पैदा करने की कोशिश कर रहा है. अब हम इस पोइम को रीड करते हैं. लेट्स स्टार्ट. There was an old man who said, "Hush, I perceive a young man bird in this bush." There was an old man who said, "Hush, I perceive a young bird in the bush." Hush, bush. एक बूढ़े आदमी ने हश कहा तो मैं समझा कि झाड़ी में एक छोटा परिंदा है. When they said, "Is it small?" When they said, "Is it small?" he replied, "Not at all." He replied, "Not at all. It is 4 times as big as the bush. It is 4 times as big as the bush." जब इन्होंने पूछा क्या ये छोटा है, उसने जवाब दिया हरगिज़ नहीं, वो इस झाड़ी से 4 गुना बड़ा है. तो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड इट. अल्लाह हाफिज़. Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.